All right, welcome everyone. Welcome to this episode of Nifty की बात. I have with me Mr. Jay Thakkar and Mr. Raj Deepak Singh. हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट एंड दिस इज 11:55 AM. आप ये प्रोबेबली अराउंड 1 PM देखेंगे तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट कि जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज सपोज टू बी एन एजुकेशनल सेशन जहां पर कि करंट डेटा करंट लेवल्स को देख के कैसे एफएनओ की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. सो अगेन द पर्पस इज एजुकेशनल. डायरेक्ट कॉल्स कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, खुद समझ के देखिएगा. राइट, विद दैट लेट्स क्विकली बिगिन. जय, काफी सारी लाइंस दिख रही हैं आपके चार्ट पे. क्या है इनका मतलब और क्या लग रहा है मार्केट आउटलुक? Okay, Vishu. Hi everyone. Thanks for viewing our YouTube session on Market Ki Baat, within which we are discussing Nifty. Vishu, basically see market as we was discussing yesterday on our Twitter Spaces. Vishu, तो एक बात जो स्ट्रैटेजी मैंने और राज ने बताई थी वो ये थी कि अगर आपको 550 के आसपास निफ्टी दिखे तो एक बार पुट ले लेना, और अगर स्ट्रैडल आपको 100 या 100 के नीचे मिले तो आप स्ट्रैडल लॉन्ग कर देना. तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी सुबह सुबह ही मिल गई. तो सुबह सुबह हुआ ही विशु, मैं आपको बताता हूँ. ये आज का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है. तो सुबह ये हुआ कि बाजार ऊपर खुला, 60-70 पॉइंट ऊपर था, तो इट वेंट अप टू 535 एंड इट फेल टू से 433. तो वहां से 100 पॉइंट गिर गया. वो पुट वाला ही काम तो था सुबह, इफ समवन कुड हैव एक्ट. And Subhay straddle भी कम था. We recommended here as well long straddle, and it delivered good returns. So that was our view. In fact, the same view we had presented on in the media interaction as well. I mean, जहाँ पे long strangle initiate किया था at the price of 56-57, which went up to 90-92, and that also was successful. Now, if we see, then we should. Extending our discussion of Twitter Spaces, the view which I had was this issue that the market was in this kind of a range. So this is the reason, before or while we were actually starting this session, I was actually working on that charts and trying to show something. Was this that market went up, provided a breakout, didn't do anything for a couple of days and came down. Okay, and came down. And again it got stuck and then found support, but then got stuck, and then finally it provided a breakout here this day, again from this line. It again next day went down, then again went up, taking this high but not closing above it, and then finally it took off. Now ये सब जो हो रहा है ना, what's happening is going up, not getting the follow up and coming down, going up, not getting the follow up, coming down next day, going up the same day, not giving a close, again no follow up. Now again a breakout, no follow up. So there is no follow up issue. See, in this entire thing, what has happened is it went from here to here. It did go from here to here. So our bias is positive until unless you are not seeing a reversal, or we don't get an indication from like this to probably say like this, some levels which I and Raj discussed, maybe from an intraday perspective, expiry point of view 25,200, from monthly expiry point of view 24,800 to 25,000 range. ये सब भी हमने बात की. So this is positional view is there intact कि भाई ये धीरे धीरे तो ऊपर ही जा रहा है. So overall positionally is creating money, but for the momentum traders, the short term traders, actually what's happening is the breakouts are not giving follow up, and wherein they are getting stuck and not making money. So the entry and exit have become very fast, and thereafter now again we are into the range. So to trade this kind of a market basically is not that easy, wherein you are getting very swift moves, with a very clarity. Okay, that up hai. See, generally swift move का मतलब क्या होगा विशु, which you get on the hourly charts. All the 15 minutes. So the time frame has come down. Understand that, and viewers understand that. From when this happens, basically you need to shift your time frame. One below is where you get that momentum. So you see here, I mean, when this trend got established, I mean, if this would have actually got broken, so क्या हो गया? When this got broken, the trend reversed from up, down or sideways to up. उसमें फिर हर डिप को बाय किया, ऊपर गया, डिप को बाय किया, ऊपर गया.
And now when the range has got again established, आप छोड़ दो, आप डायरेक्शनल ट्रेड नहीं कर सकते इसमें. डायरेक्शनल आपको अब ट्रेड करना है जब इसके ऊपर जाए ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, एंड देन व्हेनेवर लोअर टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल मिले मोमेंटम डाई का, यू अगेन स्टे आउट. यू कंटिन्यू टू डू सो टिल डेली सेटअप में आपका वो फॉलोअप नहीं आता है. आप लोअर सेटअप पे आप ये करते रहो. नाउ कमिंग टू लोअर सेटअप एट प्रेजेंट, right? What do we do? So my worry is only one which I and Raj were discussing on our Twitter spaces, is that most of the events are done and we are here now. So the major event for us domestically is the result season, and it's the Q1 numbers. So the Q1 is like the first quarter of the new financial year, right? So it's going to be pretty important because see, there are a couple of things. I mean, how the guidance are going to be by the those stocks or those companies which are based on the consumption a lot. They are going to be having a positive outlook or not. Maybe very important would be IT, because if US is not going into recession, which it seemed like it will go into recession. Now, is it going to go into recession? I mean, at lifetime, can someone say that? I mean, if tariff deals are done, then wouldn't the Fed chairman Powell would thereafter cut the rates, because till now he had a reason for not cutting rates which was valid from his point of view, that if he cuts rate but then he has no clarity on tariff and inflation can go up, so how can I, in anticipation of high inflation, can cut the rates? But now how can one have an anticipation of high inflation? I mean, that's what Dow is reflecting, I suppose, because deals are happening now. Maybe sooner or later it can delay, but it will happen, because if it has happened with the largest one of the second largest economy like China, then why will it not happen with the third and fourth largest economy like India, or maybe thereafter we have France or Japan, or why will not it happen with Germany if it can happen? So it will happen. If those things happen, then how can US can go into recession because of tariff? And why will Fed not cut the rates? तो मुझे हिसाब से आईटी फिर शायद गिरे नहीं. बढ़ना तो बात की बात है, वो तो गाइडेंस देखते हैं, पर गिरना का रीजन वो जो था वो नहीं है यूएस रिसेशन. तो हमारा ही रिजल्ट बचे ना विश्व, नेगेटिव के लिए वहीं पे कुछ हो सकता है. वो आईवी का वरी मेरा और आज का वही है कि वो नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये वाला ब्रेकआउट फॉल्टर नहीं करना चाहिए. सो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बताऊंगा कि टेकिंग अ व्यू फॉर द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी इज लाइक बी पॉजिटिव, बिकॉज धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है. इसमें से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है जिससे मैं कह दूं कि ये वाला फॉल्स ब्रेकआउट हो गया. सी आई कैन नॉट एंटिसिपेट अ फॉल्स ब्रेकआउट गाइस. I mean, it's very difficult for anyone to anticipate a false breakout. I mean, it's difficult for me at least. So I cannot anticipate कि breakout falls होगा कि नहीं. All I can say is that fresh buying, if you want to do, it has to be these levels where market is getting stuck 1, 2, 3 times, probably 4 times, 5 times. Eventually, it will, if the trend is inherent trend is bullish, it will. So you get a very clear view about 25,600, 25,600. Positionally for next weekly, this is my guidance or suggestion, friends. Beyond 25,600, if you see Nifty, I think then you should be definitely doing bullish strategies. It can be a bull call spread, it can be a long call, it can be a covered call, it can be a protective put. These all you can implement. I mean, I can recommend all of these, or you can do it on yourself. I mean, this is what it is. I mean, the view is given very clearly to you. These 4 strategies you can easily do. Yeah, if you have a view that limited upside hoga, then probably you can do a ratio spread as well. But then that has a risk of one leg being extra short. Bearish view for me is that कि कौन से level के नीचे do I change my view when do I implement bearish strategy? Now that's going to be tricky issue. So for me it would be, see, first hint I would get below this level 25,300. ये देखा था आपने 25,300 के दिन ही एक्सपायरी के दिन ऊपर जाकर नीचे आया, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर गया. तो ये जो लेवल है ना, ये जब निकाला ना उसने, फिर अब तक उसके नीचे नहीं आया. सो फॉर मी दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट. 25,300 के नीचे मैं पहले, आपको चाहिए तो यू कैन लिक्विडेट लॉन्ग्स इफ यू आर द वन व्हिच यू आर होल्डिंग राइट नाउ. एंड आपका 25,600 के ऊपर आप जब बाय करते हो तो आपका 400 का स्टॉप लॉस होगा, या तो आप 300 ही रखें बिकॉज देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. 400 300 के नीचे यू गो, यू कैन डू small position sizing on the put side.
and below 25,000 and 24,800 you can increase that. So position sizing can be this way. So that's my outlook for next week. Now for today, final my words and then over to Raj. So for today, what could be the strategy? See, this is a very clear cut range. I mean, anyone who is spent few weeks or months also into the market looking at this chart, we should make it कि हाँ भाई इसके ऊपर लेने का, इसके ऊपर बेचने का, इसके नीचे बेचने का. आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी. सो इसके ऊपर लेने का मींस इट इन ऑप्शंस टर्म्स इट वुड बी बाइंग कॉल एंड बिलो दिस वुड बाइंग पुट. नाउ विदिन व्हिच otherwise it will consolidate here. Now do I sell here at 25,500 Nifty? See, I'm hardly getting what 30 and 55 rupees. Now that's not the risk reward which I will go for. So rather I don't trade a day. Honestly, if I no compulsion trading, I don't do it at 55 rupees straddle. I cannot go short, and if I'm creating wings, then I can. So 25,000, I am getting 50 rupees. Even if I'm creating wings, Vishu, I'm getting what 12 rupees. I have to pay 24 rupees. I'm paying, so I'm getting 1:1 risk reward. So those who want to trade expiry with a 1:1 risk reward, I mean, you can do short and butterfly at current price. Okay. Or if you want to play a directional move issue, then for me it would be buying say 25 550 call, 550 call. I'm at 500, I'm saying 550 call. Or you can even do the, for that matter, 500 call you can buy and 550 you can sell. So your cost is just 12 rupees. See, 22 पे आप buy कर रहे हो, 10 पे बेच रहे हो. 25,500 का कॉल ले लो 22 रुपए पे, 25,550 का 10 रुपए में बेच दो. कॉस्टिंग 12 रुपए, 12 रुपए जाने का. If 550 and above बंद होता है, you are getting 38 rupees. Your risk reward is 1:3, which is better than short and butterfly. I would not do a bearish strategy until these levels are broken. Until yesterday, there was that I don't want to do bullish strategy which worked until morning. Now with the current sub data, since it is managing to hold these levels, I would be going with a bull call spread for today. So two strategies for today: short and butterfly for those who are not by nature only directional traders. Okay, and those who are directional traders, bull call spread. That's my words. Yeah, what is Raj? Hi, Vishu, am I audible? Yes, you are. So, Vishu, just said, and we have also discussed yesterday also that perhaps we are in a no trade zone where we may not see any major directional move. And reason we have discussed in detail yesterday as well. But just to reiterate all those things, कि आपकी volatility इतनी कम है, market is not expecting much decline. The panic in the market is too low. Second, there isn't any event which is lying down or we can expect in a day or two which might happen. So also that could be the reason that why Nifty hasn't performed. Your FI flows, they are also muted since the beginning of the July series month particularly, I would say. We have seen marginal outflows also. So that is a major reason why Nifty is not able to perform the same way it was what we have seen in the last week of the June expiry. But overall, like Jay said, and I'm also expecting the same thing, that there won't be much decline in the market. The liquidity which we are having as a domestic from the domestic front is going to provide much needed support in the markets, and perhaps 25,200 sort of level on a very short term basis is going to be very strong support. हाँ, positionally और एक trend पर से I'll stick to that 24,800 levels. उसके अब नीचे नहीं जाना चाहिए. Otherwise, your entire up move is negated. Now, coming today, see, we opened almost flat. The opened higher, gave up those gains, and again moved higher, again giving up those gains. But in nutshell, nothing is happening. And if you'd like I just said कि आपका जो EDM straddle के premium में आप उनको देखो तो कुछ है ही नहीं. Market is not expecting any sort of move. And if you look at even the open interest for the today's options data point, so आपका 25,600 call strike is having almost 3 crore shares. Even ATM 500 call, right now it's ATM at 1210. That is also holding almost 2.5 crore shares.
So 2.8 crore shares. So market is not expecting at least upside in the short term. और अगर जैसे जय ने बोला कि अगर मुझे डायरेक्शनल वॉइस पे खेलना है तो कल भी इसी तरीके की राइटिंग हुई थी, आज भी वही चीज कंटिन्यूड है एटलीस्ट इन द कॉल ऑप्शंस। तो मेरे ख्याल से अगर 25,550 के ऊपर हम दोबारा निकल रहे हैं, दैट माइट बी द शॉर्ट कवरिंग मूव, दैट माइट ट्रिगर शॉर्ट कवरिंग ऑन अ हायर साइड। But till that is not happening, it's better to don't आप पहले से वी शुडंट गेट इनटू दैट पोजीशन कि चलो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी कभी। एंड जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी की ओनली if Nifty is able to sustain 550 odd levels, perhaps that might trigger a round of short covering. We may see that an uptick in the market. But if that is not happening, market is going to remain here only. Even on the downside, as of now, there isn't any major put base. But whatever it is, that is at 500 or 400. So perhaps I still believe that yesterday's low वो तो काफी नीचे है, 400 के आसपास है, but today's low it's at around 440 or 450. That should not be broken once again, क्योंकि उसके नीचे जब जा रहा है तो इसका मतलब है कि नहीं, अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर that might continue, we may extend our downside further. But even for that also we need to see whether your Nifty is moving below 450 or not. Now ये तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो गया कि मैं 550 450 की बात कर रहा हूँ। 500 पे चल रहा है, आपका एटीएम का कॉल का स्ट्रेडल का प्रीमियम ही 55 रुपए है। तो जब तक इन राइटर्स को पेन में, ये राइटर्स पेन में नहीं आएंगे, तब तक वी शुडंट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग। नाउ इफ यू लुक एट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स और द स्टॉक्स व्हिच आर ड्राइविंग द मार्केट, सो बैंकिंग yesterday that was also under pressure. Today HDFC Bank tried its best but again gave up the gains. Apart from Reliance, most of the heavyweights, they are not able to perform, and until unless some other names are also coming into the party or the picture, we shouldn't expect that okay market में बहुत बड़ा on a immediate basis आना चाहिए। तो जैसे पहले भी बोला था कि even from the position perspective, I think even the next week might remain lackluster like what we have seen this week. But decline towards 25,200 can be utilized for the buying, क्योंकि वो फिर भी एक सेंस बनाता है। बट सीएमपी पे बाई करना, एक्सपेक्ट करना कि हम तो 800-900 आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि 1% मूव इज एनी डेज पॉसिबल। बट फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव आई वुड स्टिल वेट कि हम जितना 25-200 के पास में, क्योंकि माय स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड दोस लेवल्स, दैट वुड बी बेटर इवन फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड अगेन ऑप्शन राइटर्स के लिए बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर देख रहे हो कि 12.2 पर है, 12.2 इज द इंडिया बेस। I wasn't expecting it to move below 12.5. मतलब 12-12.5 के नीचे I'm not expecting DAX to move down. तो वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट को either moving below 25,200, ये एक बड़ा सा पैनिक या झटका है। Otherwise, perhaps on a higher side, if Nifty is able to surpass 25,800 in the days to come, then perhaps we are in for a major direction move once again, like what we have seen in the expiry week of June month. But on an immediate basis, I don't see any possibility of happening that. I shouldn't use the word possibility, probability wise. I'm still expecting more of a range bound market in the days to come. Perhaps after 10th of July or 9th of July, when we have the TCS result coming, and that will decide the move of the IT stocks. That might be the right time when we may consider a direction moving Nifty. But on an immediate basis, perhaps we are going to stay here on the plus minus 0.5%, 1% in the days to come as well. Yeah, Vishnu. Absolutely. Jay, your thoughts on India VIX? Jay, आप mute Okay, हैं। yeah. So that is what I and Raj are actually trying to say, that see, Vishu, what happens is basically if there are no events and at these levels of VIX, okay, I mean, you may be having a little higher comfort of going long with a lesser hedge, okay, or maybe expecting a more upside. Now, in around the events at a lower VIX, basically, say assume forget let for instance forget results. Suppose if you have an election, maybe state election, an important state election in India, or maybe globally some
kind of US elections or maybe national elections or maybe budget. Okay. Now, when you have these kind of major events, okay, and if you have these kind of a weeks, would someone be going extreme long without any hedge? Would anyone suggest that? No, right? Why would not someone not suggest? Because the reason is that there can be increase in volatility because of the negative outcome of the event, right? Likewise, we don't have that sort of event right now, so the magnitude would be lesser. Okay, but then there can be some spike in the volatility. So I'm not saying, see, those kind of events can get your volatility or India VIX from 12 to 20 also. Okay, generally in results you don't get 12 to 20, but from 12 to 15 it can come. And that 12 to 15 is also enough for market to correct a bit, within which the stock specific move can be larger, right? Hence, it's suggesting that okay, market are comfortable, but at the same time, since you have a result nearing, results season starting, so your position should not be heavy. It could be light, and if positions are heavy, probably you should be hedged. Okay, I understand that can impact your returns negatively because you have this hedging cost attached to it. But then it's always good to mitigate a risk when you have events nearby, not a larger, a smaller event kind of a result, but then that event at the time of a very low VIX, that is at a time when VIX has been probably has in past reversed from this for 3 to 4 occasions. That is, this is one, this is two, I mean this is three, you can say, and now fourth, the fourth time we are here. And many a times, I mean, it has reversed from say 13.2 or 13.3. I mean, you can see, for instance, here, couple of times here, couple of times here. I mean, this from this ranges, the recent historical data. I mean, of last 1 year only. So this is from June 24, and we are in July 25. So past 1 year, this is what acted. I mean, until we don't see it go below that, sustain below that, and then spend a lot of time at around 10. That clarity is also not there. And for that, we have discussed many a times that weekly expiries on a daily basis have been stopped. So all of that happened in derivatives probably, have actually got this VIX days a bit higher from 10, 9, 10 to probably 12, 13. So we had this view always, and since last 1 year, in fact, or maybe 9 months, I and Raj had this view that the base has shifted by at least 200 basis points from 10 to 12, 13. And most of the times it has worked. 12, 13 से jump किया ही है. So until it falters, we would go with that कि probably ये time भी वो 20 ना जाए, तो 15-16 जाए. So that's my view on India VIX issue. Right, absolutely. So ये तो आज का हम लोगों का हो गया. थोड़ा सा कैन वी ऑल्सो टॉक अबाउट अपकमिंग वीक के बारे में एनालिसिस की थोड़ा सा और लॉन्ग नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजीज हम लोग रख सकते हैं? Yeah, I have already shared my new strategies for next week. I mean, Raj, would you like to? I mean, I have given that. I would go with bullish strategies beyond 25,600. Beyond 25,600. I mean, Raj can add there. देखो विशु, जो even for the next week also, now I'm not expecting any major move. What might happen that even for the next week, if you look at just the data points, so people are pounding on the ATM strikes once again. Perhaps like Jay is saying, beyond a certain level, we might witness a round of covering. So perhaps it could be 25,600, or above which only we should target on a high direction or the positive bias. On the similar ground, I'm not expecting Nifty to move below 25,200 as well. तो आपको अगर 300 के आसपास मिलता है, so with that stop loss around 25,200 or 180 sort of levels, one can even think from the going long from those levels. Now प्रॉब्लम यहाँ पर दो हैं. पहली चीज ये है कि आपका जो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लिमिटेड आ रहा है. दैट इज प्राइमरली फ्रॉम द रिलायंस. बाकी आपके इधर दे आर द रेंज बाउंड. आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स. So either they are the range bound or they are not able to hold on, particularly the banking names. So
And what I believe, if I'm looking at those data points, even for the banking stock, so immediate basis per, I'm not expecting much of upside in the banking also. So अगर मेरे को लॉन्ग साइड में खेलना है मार्केट में, तो कौन से स्टॉक्स ड्राइव कर सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए. And as of now, apart from Reliance, no other stock comes into my mind. Perhaps if we get some sort of decline, like I said, कि हाँ 150 पॉइंट की 300 के आसपास निफ्टी मिलता है, then perhaps we may have that leeway कि मैं वहां से एक बार 600 के लिए खेल लूं. बट अगर जैसे जय बोल रहे हैं कि 600 के ऊपर आ रहे हैं, then most probably many of these names will be able to surpass their wall basis. So in case any name from the large cap perspective of top 5 Nifty stocks, they are able to sustain their highest call basis, perhaps that might be the case when we are looking for a short covering for the large moves in those names. But index per se, I would remain skeptical कि हाँ मैं क्यों डायरेक्शन के लिए बेट करूं जब मेरे पास वो ट्रिगर नहीं है डायरेक्शन को खेलने के लिए. सो आई डोंट वांट टू प्रीमेडिटेट द डायरेक्शन. I would wait for the levels either on the lower side or on the higher side. और जो पहली बात तो ये होगी. दूसरा जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बार बार जय भी बोल रहा है, मैं भी उस चीज पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज द इंडिया विक्स 12.2. आप 12.2 से कुछ भी छींक भी आती है किसी चीज में. एक टाइम था ना कि जब लोग बोला करते थे कि यूएस छींकता है और बुखार हमें होता है. आज की डेट में जो इंडिया विक्स है उसकी हालत वही है कि हाँ कोई छींकेगा भी नहीं कुछ, तो भी we might witness a 2 to 3% sort of move in India VIX. So that remains a gray area. तो देखते हैं उस पर कैसा रिएक्ट होगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच डिक्लाइन फ्रॉम हियर. तो ऑप्शन सेलर्स के लिए मेरे ख्याल से जो रेंज बाउंड मार्केट है, इससे बेटर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती. बट दे नीड टू थिंक अबाउट कि ओके एटीएम की बजाय अगर वो ओटीएम में जाएंगे 25,200 ऑन लोअर साइड और 25,800 ऑन हायर साइड, इस तरीके की उन्होंने रेंज पकड़ के रखी है. एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर स्टॉप लॉस दे कैन ट्रेड ऑन दैट. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक सवाल और मुझे ये पूछना था कि ऑफ कोर्स द प्राइमरी यूटिलिटी ऑफ ऑप्शंस इज हेजिंग. तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है ये चीज की, एंड ऑफन जब डिस्कस किया है तो मार्केट जब गिरा होता है तब लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हेज करना चाहिए पोर्टफोलियो पुट के थ्रू. वी हैव कैलकुलेटेड आल्सो कि आप कैसे, वी हैव डिस्कस कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में आपको पुट चाहिए, या वो उसका बीटा एक्चुअली मैच करता है या निफ्टी को या नहीं करता है, ये भी हमने डिस्कस किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज डिफरेंट. राइट नाउ इट डजंट लुक लाइक विक्स हमारा इस समय नीचे है, अनलाइक जब लोगों को याद आती है कि मार्केट गिर गया है ऑलरेडी, अब पुट खरीद लें क्या, जब सवाल आते हैं. तो अभी मार्केट का ऐसा कोई विक्स नीचे है तो ऑफ कोर्स प्रीमियम्स थोड़े कम है, मार्केट इस समय लग रहा है कि एक स्टेबल जोन में. तो इज दिस द टाइम जब हेज करने का देखना चाहिए लोगों को? विशु, हेज आप क्या करते हैं? हेज आप पोर्टफोलियो करते हैं, राइट? अब मतलब ये कहना और ये सिर्फ बातें करना, इट्स मच इजियर कि हाँ हमने हेज किया होता. बट नो बडी कैन टेल यू कि किसी ने ये नहीं बोला होगा कि हाँ 21,800 इज द बॉटम और 24,000 या 26,200 वाज द टॉप. ओके, एंड हेजिंग कम्स विद ए कॉस्ट. दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट. You cannot hedge your portfolio on a monthly basis. Okay, every month you cannot spend 1.5% or 2% as a cost. No portfolio gives you a return like 25% in a year. Right. And at the same time, if you go for the yearly perspective, so you need to think from number of perspective कि आपके required किस तरीके की कैपिटल रहेगा, आप कितना बीटा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. So एक होती है ना, दो धारी तलवार होती है hedging, कि आप उसको कब करना चाहते हैं और कैसा करना चाहते हैं. तो आई वुड से, मतलब ये मेरा पर्सनल बायस भी है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग हेजिंग इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप हेज इसलिए नहीं कर रहे हो कि पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है. आपको क्या उसे बेचना है अगले 1 साल में या 2 साल में? अगर आपको नहीं बेचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हेज मत करिए. आपने इतना बड़ा ऊपर नीचे देख के आप आ गए ना वापस 1 साल में, राइट? तो अगर आपको बेचना नहीं है तो आपको हेज नहीं करना. अगर हमें अपने बच्चों के लिए छोड़ना है तो व्हाई डू यू वांट टू हेज इट, और एवरी ईयर व्हाई डू यू वांट टू इनकर दैट कॉस्ट. बट अगर वो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, लेट्स सपोज आई हैव बॉट सम बैंक, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस ओनली, इफ आई हैव बॉट दैट, आई हैव अ टारगेट इन माय माइंड कि हाँ अगर
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होगी, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो नहीं, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और मेरे दिमाग में 2000 आएगा तो मैं निकाल दूंगा. इट्स बेटर टू डू कवर्ड कॉल ना. ट्रेडिंग में तो आप एक स्टॉप लॉस रखते ही हो. 1500 चल रहा है, मेरा 1300 का स्टॉप लॉस है, 2000 का मेरा टारगेट है. सो आई विल डू द कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी. आई विल नॉट बाय पुट ऑप्शंस. आई विल कीप ए स्टॉप लॉस इन दैट स्टॉक. राइट. क्योंकि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस और आपके निफ्टी का परफॉर्मेंस काफी अलग होता है. राइट. तो मतलब व्हाट आई एक्सपेक्टिंग, आई कीप ऑन टेलिंग गाइस कि यार ये सिर्फ बातों में ये चीजें अच्छी लगती है कि हेजिंग होता है, ये होता, बट एक्चुअली कोई करता है क्या और कितना कर पाता है. तो आप हेजिंग करिए, बट उसको सही तरीके से करो. निफ्टी वर्सेस मिड कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो डजंट मेक सेंस. या सॉरी. Yeah, I agree with you, Raj. I was going to say that only. I mean, when then Vishu asked this question, I was like, Vishu, I mean, the portfolio which you have it for longer duration. Okay, you consider that as a long-term portfolio. The portfolio which you have for a shorter duration, you term it as a trading portfolio. Right. Trading portfolios needs to be hedged. Okay, it can be by selling call, by buying puts, by buying puts and also selling puts to reduce your hedging cost. By buying puts and selling calls, and at the same time, by selling puts as well at the lower levels. There are different ways to do it. कि आपने पुट खरीदा हुआ है, एक लिमिट तक आपको पता है कि बाजार ऊपर नहीं जाता, सर्किट ऊपर का. मैंने मेरे करियर में एक बार देखा है अपर सर्किट. दैट वाज ड्यूरिंग 2009. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट सीन एन अपर सर्किट. तो आप लॉन्ग डेटेड आप ऑप्शंस आगे के बेच देते हो, गिविंग योर रिव्यू, और उतना तो आपका पोर्टफोलियो चले जाता है. ट्रेडिंग पोर्टफोलियो तो आपने प्रॉफिट ही बुक कर लिया, फिर प्रॉब्लम ही क्या है. राइट. तो आपने कॉल भी बेचा है, पुट भी लिया, और नीचे का पुट भी बेचा, विच ब्रिंग्स डाउन योर हेजिंग कॉस्ट टू लो एंड सम ऑफ योर हेल्थ आल्सो. एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आई एम विद राज. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको क्यों, जैसे मैंने बताया कि विच इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, आपको हेजिंग क्यों करना है उसको. I mean, rather you sell calls and always, because in the 5 years, 7 years time period, we have seen that till the time India story is not reversed macro level पे कि इंडिया ही टॉप हो गया. राइट. आपका आउटलुक इंडिया पे ही बुलिश निकल जाता है, आपका पोर्टफोलियो ही क्यों है, फिर हेज क्यों करना है. पोर्टफोलियो ही नहीं रहना चाहिए. राइट. रेदर देन होना भी चाहिए तो डेट में होना चाहिए, इक्विटी तो होना ही नहीं चाहिए. When you have that sort of a view, still you want to be heavily invested in equity and want to hedge also. That doesn't make sense. तो जब आपका मैक्रो लेवल इंडिया पे इतना बुलिश है, जब तक वही रिवर्स नहीं हो रहा है, I mean, kind of a long-term investor to sell calls of a very far strikes, and if you're not getting that on a monthly basis, you'll definitely get on a yearly basis. Far outdated, आप वो करिए, आप उसका अल्फा जनरेट करिए आपके पोर्टफोलियो में. सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे ना, तो आपका वो हेजिंग कॉस्ट जितना जमा पैसा आपके पास हो गया, that makes more sense. That's how hedging has to be done. A trading portfolio always has a limited mindset only कि बाजार इतना ही ऊपर जाएगा. Trading portfolio cannot have unlimited upside. Investment portfolio can think about unlimited upside. कोई सोच सकता है कि मैं 100 रुपए वाला स्टॉक ले रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 500 भी जा सकता है, 1000 भी. Can give me 5x, 10x? How can a trading portfolio someone can think 5x, 10x? Then I think there is a different mind. There is not a proper understanding probably that a trading portfolio in an equity you think about 5, 10x. It cannot happen so, right? So you have say 30, 40, 50% in mind max in a trading portfolio. For that you can always sell cover call. उतना बढ़ गया आपका रिस्क है, आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया. आपने कॉल भी बेचा, पुट भी लिया और पुट भी बेचा. तो ये जो कॉल और पुट आपने बेचे ना, उसमें से आपने थोड़े जो पुट खरीदे उसका कॉस्ट निकल गया. So you can calculate likewise. तो मैं ये दोनों बेचे तो मेरे को कितने पुट आएंगे और कौन सा वाला आएगा, कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करूं, वो हो गया तो आपका क्या हेज भी हो गया इन अ वे. You got my point, right? Absolutely. Absolutely. Okay. I think that was it from my side for today. Thank you for those insights. But before we close, एक बार आपकी concluding advice, कुछ concluding remarks? Sure. So see, while Raj was discussing and very rightly, Bank Nifty, Fin Nifty पे पूरा जोर होना चाहिए बाजार को अगर निफ्टी को ऊपर जा रहा है. बिकॉज सी विद दिस काइंड ऑफ अ सेटअप इन अ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, दिस इज नॉट अ बुलिश सेटअप. I would not say it's a bearish setup until unless it's broken, but it's not even a bullish setup. So again क्या हो गया? See Vishu, what is happening? यहाँ से ब्रेकआउट आया,
एंड फॉल्टर्ड, ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया, this has come down already in Nifty is not 25,300 is the level I told you. Nifty is not, fin Nifty is, this is my worry कि क्यों ये टाइम भी नहीं हो सकता है क्या ऐसा. So I cannot be ultra bullish. I mean, without hedging, as you said. So a trading portfolio as of now has to be hedged at 12.3 weeks. And when these things are happening in other sectoral indices, which were supposed to be very strong and which were strong and which created lifetime highs. And everyone is bullish on financials. Who is bearish on financials? I mean, I'm not saying no one is, but then majority, I think, are bullish. I mean, that is what I have heard. And second is Bank Nifty. So this was when Nifty see here. Why just not gaining momentum? Right. Faltered again. If you see, it's coming down. I mean, it's not much as much as Nifty, but why is not sustaining? So I'm not saying that, see, unless you get this uptrend line ka breakdown, you would not say it's confirmed now. Yeah. But it's raising doubts for an uptrend also. So right now it's like, if I would have not had any position in market, I would not create only. Yeah. You're getting my point? But if I have it, I don't have a choice. I have to do something. Then what do? I have to hedge at 12.3 with this kind of a scenario. Wherein these two things, where they are having 40% weightage, ये लोग डरा रहे हैं. और ये लोग क्यों डरा रहे हैं मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है. Because fundamentally things are good for them. I understand for the first quarter रिजल्ट आएगी तो शायद वो इतना अच्छा ना हो कि गाइडेंस रहेगा 2-3 महीने के लिए, बिकॉज रेट कट हुआ तो मार्जिन निम्स को इम्पैक्ट हो सकता है, बट गोइंग फॉरवर्ड द आउटलुक पॉजिटिव है. अगर रेट कट होने से इकोनॉमी ग्रो करनी है तो लेंडिंग, बट सपोज थिंग्स आर पॉजिटिव, बट देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना मैं तो. फॉर दिस मंथ जुलाई, वी आर टॉकिंग फॉर जुलाई, वी आर नॉट टॉकिंग फॉर अगस्त. तो वो जुलाई ये मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है फाइनेंशियल्स. आई डोंट नो व्हाई. This is the only sector which was giving a lot of comfort earlier for uptrend, and this is the only sector which is giving me discomfort. Rest all the sectors, I mean, Raj discussed about Reliance, absolutely correct. वो तेजी चली, टेलीकॉम देख लो, आइडिया जैसा भी स्टॉक चल रहा है, जो चल नहीं रहा था. So telecom is doing, cement is doing, oil and gas is doing, metals strong under performance, लास्ट 2-3 दिन से परफॉर्म किया. So apart from financials, rest all have not. Rest all have performed. This is the only sector which is not performing and which is weighing pressure on Nifty. और ये क्यों इधर इतना ऐसा हो रहा है ना? I don't know. Probably if Raj wants to add something on it, I don't know. And this is something मुझे discomfort दे रहा है. To go too much long. हाँ, लेवल्स को मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो 25,600 के ऊपर निफ्टी निकला, ये नहीं निकला, स्टिल आई वुड से कि आई हैव एडवाइज कपल ऑफ स्ट्रेटजीज, राइट? प्रोटेक्टिव पुट, कवर कॉल, बुल कॉल एंड लॉन्ग कॉल. आई मीन दीस आर द फोर थिंग्स. एंड इफ यू हैव अ लिमिटेड अपसाइड कि भाई चलो बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स नहीं निकल रहा है, खाली निफ्टी निकल रहा है, तो मैं रेशियो स्प्रेड कर दूं. सो अबाउट 25,600, नो डाउट बुलिश, यू डू दैट. बट ये यहाँ पे क्यों ऐसा है ना, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. Because it's mainly because of the private sector, not because of the PSU. But क्यों? Apart from NIMs और कुछ भी है क्या? I don't know. So that's my closing comments here, Vishnu. Right. Raj? Raj आप हमारे साथ हैं? I think उनका free. Hey, Raj is still there. Yeah. Raj Can you hear me? yes. Yeah. Any concluding remarks from your side? No. Jay has covered it. See, again, I'm not expecting any sort of move right now, so will be abstaining myself from giving a view. मतलब एक व्यू गलत जाए, I don't have any issue. But जब आपका व्यू ही ये है कि आपका कोई मूव नहीं आने वाला, तो बात ही खत्म हो जाती है. So I am not looking for any directional move in the short term. और एक जैसे जय बोल ही रहा है बार बार कि he needs some confirmation, he is not getting into very strong bullish bias. So perhaps that's why he is saying कि एक बार 25,600 के ऊपर निकलता है, then only one should attempt long. Right. And obviously we discussed banking और financials, so उन्होंने financials निफ्टी का चार्ट भी दिखाया. So क्यों हो रहा है? I think most of the things are in priced in. If you look at your banking index, so that was the major driver of the market up move. Now एक बार हमने मूव दे दिया,
Now people will wait for the results कि हाँ भाई कैसा रिजल्ट आ रहा है, जो आपको आरबीआई ने दिया है, जो दिया है कि आपके रिटर्न्स या रेशियोज किस तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं. अगर रिटर्न रेशियो इंप्रूव होंगे तो मार्केट जो है उन चीजों को रिवॉर्ड भी करेगा. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक मार्केट इज इन मोर ऑफ ए वेट एंड वॉच मोड. एंड आफ्टर दैट ओनली व्हेन वी गेट समथिंग कंक्रीट कि हाँ ठीक है मार्केट में या ओवरऑल डिमांड सिनेरियो इज इम्प्रूविंग, then only I believe that the entire focus on the banking may come once again. But as of now, it seems missing, and that might continue. Absolutely. Well, that was it for this time. Thank you so much, Raj and Jay, for your insights. And thank you so much, everyone, for watching. If you have any questions, please put them down in the comments and we'll try to get back to you. Thanks again. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.